Good evening, everyone. Class is live now. Good evening. Good evening. Babita ji, good evening. How are you? Hello, Shivam Pandey. Hello, how are you? Quite long time, Shivam. How are you? Great, great to hear that you are quite fine. So after quite long time, we are here on live. That's great. Where are you, Shivam, nowadays? अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे कुछ लोग लिंक के लिए पूछ रहे हैं। अच्छा, वीडियो क्वालिटी आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप लोगों के वीडियो में अगर ब्लरिंग आ रही है तो ब्लरिंग यहाँ से नहीं है, राइट। आप देखेंगे यूट्यूब पे जब से जैसे लाइव चल रहा है तो जो वीडियो क्वालिटी होती है, इनफैक्ट आप उस पर क्वालिटी पे जाएंगे तो ऑटो होगा। उस क्वालिटी को एडवांस कर दीजिए। जब एडवांस पे आएंगे तो 720 तक ले जाएंगे आप, तो आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी आती है फिर दैट टाइम। जैसे आप राइट में जाएंगे तो एक सेटिंग की बटन होती है ना। चलिए, तो today we are here to discuss literary device exercise 1, and that is figures of speech. Hello Ankita. Good evening. Good evening. How are you, Ankita? I think most of the students are late, so let them join. Am I visible to everybody? Is my voice clear to you all? बिकॉज एक क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में है, तो अगर क्वेश्चन छूट गया तो फिर उन स्टूडेंट्स को नहीं मिलेगा, क्योंकि स्लाइड तो एक बार कंटिन्यू है तो कंटिन्यू ही चलेगी। एंड देयर आर अराउंड 20 क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इन दिस सेशन। 2 मिनट वेट कर लेते हैं, या 1 मिनट, बच्चे ज्वाइन कर लें। ओके, एक से। हेलो भूपेंद्र आर्या, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। 1 मिनट, जरा मैं बच्चों को लिंक शेयर कर दूं। दे आर स्टिल आस्किंग फॉर द लिंक। अच्छा, लिंक ही अभी नहीं मिला है। यहाँ से तो मैंने सेंड कर दिया था। एक सेकंड, जरा मैं। एक सेकंड।
चलो, तो आई हैव सेंड द लिंक. Okay. Shall we start the exercise today? Hello, Alka. Good evening. So, Alka, as you can see, today we are going to discuss figures of speech, and especially आज total इसमें हम questions पे चलेंगे. We are going to discuss question. Hello, Shefali. Good evening. How are you? Shall we start? चलो तो सेशन शुरू करते हैं. राइट? सिंसियरली आप लोग आंसर करेंगे. ओके? चलो, द फर्स्ट टू क्वेश्चंस आर बिफोर यू. आप लोगों को आंसर करना है, एंड अकॉर्डिंगली आई विल बी डिस्कसिंग हियर. ऑनेस्ट आंसर दीजिएगा आप लोग. सो यू हैव टू रिकॉग्नाइज द फिगर्स ऑफ स्पीच, and accordingly you have to choose the correct option as your answer. I'm good. English learning, may I know exactly who is this English learning, as your name is not there? जूम आप कर लो वहां से. मेरा तो फुल जूम है. आप ना इस हॉरिजॉन्टल अपना फोन कर लीजिए. अगर आप फोन पे हैं, लैपटॉप पे हैं, तो कोई बात ही नहीं. राइट? चलिए. हेलो कृपा, गुड इवनिंग. चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए. फर्स्ट क्वेश्चन इज, swear by thyself that at my death thy sun shall shine as he shines now, and therefore and theretofore and heretofore, and having done that thou hast done, I fear no more. जॉन डन की पोएम है, A Hymn to God the Father. So these lines have been taken from John Donne's poem, A Hymn to God the Father. Answer please. Pun, oxymoron, antithesis, and synecdoche. Yes, Kripa, Shefali, quickly अपने अपने आंसर करिए. अगर किसी को ब्लर हो रहा हो तो मैं बता दूं आपको सेटिंग. सिंपल जो वीडियो चल रहा है इसी पे राइट हैंड पे आप देखोगे ऊपर एकदम यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन होगा. सेटिंग पे क्लिक करिएगा तो आप देखेंगे क्वालिटी जो ऑटो पे होगी, वहां पे क्लिक करके करेंगे तो एडवांस, एकदम नीचे एडवांस की सेटिंग आएगी. एडवांस पे कर देना, और एडवांस में जितना हाई कर देंगे उतनी अच्छी क्वालिटी आ जाती है वीडियो की. कृपा आंसर करो. शेफाली, अलका, अंकिता. You guys are not answering. You don't have to search for the answer, right? You have to answer here. Pun, oxymoron, antithesis, synecdoche. You must have read John Donne. Ankita says it's first C and second A. Okay. Alka says spun. Yeah. चलिए, तो आंसर डिस्कस करते हैं फर्स्ट टू क्वेश्चंस का. राइट? यस, फर्स्ट में इट इज स्पन. राइट? इट इज स्पन. व्हाई इट इज स्पन? If you see the word sun, right? If you see the word sun, what does it mean? Sun stands for, mean when one word gives more than one meaning, one or two meanings, it is pun, right? The play on words. So here the word sun gives two sense: one son of someone, and one sun that is shining. Is that clear, everyone? When one word is used to express two or more meanings, it is called pun.
Oxymoron, as we know, two opposite words are put together. ऐसा कहीं पे दो opposite words एक साथ नहीं है. Antithesis simply means putting two opposite ideas together in a sentence, contradictory ideas that is not there. Synecdoche means when part is used to express whole and whole is used to express part, and no such expression is there in these lines. Clear हो गया everyone? Okay. So it is pun. The first question, option A is correct. It's pun. Right? चलिए. Hello Yashika. Good evening, beta. Good evening. You joined late. Chalo, come to the second question. Second question is, O for a draught of vintage that had been cooled a long age in the deep delved earth. जॉन कीट्स की बहुत ही पॉपुलर वन ऑफ द ओड्स ओड टू अ नाइटिंगेल. अलका, आंसर प्लीज. लेट्स सी. अंकिता हैज गिवन आंसर. अंकिता हैज गॉन फॉर सेनेक्टाकी. गुड इवनिंग यशिका. आंसर करिए आप लोग क्विकली. आई एम येट टू गेट योर आंसर्स. कृपा. यशिका सेज अंजी याद ही नहीं रहा. ओके, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं. आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर. अभी तक आंसर नहीं आया. शेफाली. ओ फॉर अ ड्रॉट ऑफ विंटेज दैट हैथ बीन कूल्ड. देखिए, आप एलिमिनेशन से चलिए. इफ यू यूज एज सेनेक्टकी, एज अंकिता हैज गिवन आंसर सेनेक्टकी, राइट? अंकिता, अगर आप इसे सेनेक्टकी लेते हो तो सेनेक्टकी मींस व्हेन पार्ट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस होल, होल इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पार्ट. इसमें कोई ऐसा वर्ड आपको लग रहा है जो होल से पार्ट या पार्ट से होल एक्सप्रेस कर रहा है? कोई ऐसा वर्ड? ड्रॉट या विंटेज, डीप डेल अर्थ, यहाँ पे ऐसा कोई वर्ड है? बिकॉज मुझे तो ऐसा कोई वर्ड नहीं लग रहा है. लग रहा है? अच्छा, ड्रॉट का मतलब क्या है यहाँ पे? ड्रॉट मीन्स घूंट. और किस चीज की घूंट? विंटेज. विंटेज स्टैंड्स फॉर व्हाट? हियर विंटेज स्टैंड्स फॉर वाइन, राइट? विंटेज का मतलब यहाँ पे वाइन है. और जब हम व्हेन अ वर्ड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ मीनिंग दैट इज क्लोजली एसोसिएटेड टू इट, इट इज कॉल्ड मेटोनिमी. याद आया अलका? जॉन कीट्स की पोएम है ओड टू अ नाइटिंगेल, वन ऑफ द फेमस ओड्स बाय जॉन कीट्स, राइट? तो इसमें विंटेज, दो विंटेज का मतलब होता ओल्ड. तो ड्रॉट ऑफ विंटेज दैट दैट हैथ बीन कूल्ड अ लॉन्ग एज. तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई वाइन अर्थ में रखी गई है एक लंबे टाइम तक, तो वो वाइन जो है विंटेज वाइन होगी. बट यहाँ पे विंटेज इज यूज्ड टू एक्सप्रेस वाइन. विंटेज स्टैंड्स फॉर वाइन, हेंस चेंज ऑफ नेम. तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो गया? मेटोनिमी. क्लियर? इट्स ए मेटोनिमी फिगर ऑफ स्पीच. क्लियर? यशिका, अलका, कृपा, अंकिता, everyone, answer please. Be quick at answering. चलो.
नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन। नाउ कम टू थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तब तक आप इससे लर्न करो यशिका। यहां पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप बस इसको समझने की कोशिश करिए। थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन पे आइए। I know a man that had this trick of melancholy, sold a goodly manor for a song. शेक्सपियर्स all's well that ends well में ये लाइन है। I know a man that had this trick of melancholy, sold a goodly manor for a song. Which figure of speech is there? अगर ट्रांसफर्ड एपिथेट है तो कैसे है? Can you explain exactly how it is transferred epithet? How it is transferred epithet? कृपा says कृपा also says transferred epithet. देखिए ट्रांसफर्ड एपिथेट तो तब होगा जब कोई नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग बीइंग की क्वालिटी ट्रांसफर कर दी जाती है। और यहाँ पे कौन सा ऐसा वर्ड है जिसमें नॉन लिविंग की क्वालिटी लिविंग बीइंग की क्वालिटी को नॉन लिविंग थिंग्स को ट्रांसफर कर दी गई है? यस, इज देयर एनी सच वर्ड? हेलो कसीम, हाउ आर यू? चलिए बाद में, तो इसका आंसर मैं अब देता हूं क्योंकि अभी तक कोई करेक्ट आंसर नहीं आया है। देखिए पहले ये सेंस समझो, फॉर अ सॉन्ग, राइट? फॉर अ सॉन्ग मींस, फॉर अ सॉन्ग फ्रेज का मतलब होता वेरी चीप, वेरी चीप। ये आपने फ्रेज पढ़ा भी होगा, इडियम्स एंड फ्रेजेस में आपको पढ़ाया जाता है फॉर अ सॉन्ग। इफ समथिंग हैज बीन सोल्ड फॉर अ सॉन्ग, इट मींस समथिंग हैज बीन सोल्ड फॉर अ वेरी चीप प्राइस, राइट? इसका मतलब क्या है कि उसने अपने, राइट, गुडली मैनर को, राइट, फॉर अ सॉन्ग बेच दिया। गॉट इट? इज दैट क्लियर? तो फॉर अ सॉन्ग एक सॉन्ग के लिए, एक सॉन्ग का मतलब होता है सिंपली समबडी इज जस्ट सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर यू एंड यू आर सेलिंग योर मैनर टू हिम। यहां पे सॉन्ग स्टैंड्स फॉर वेरी चीप। अगेन, because song gives the meaning of very cheap, again the word has been used to express a different meaning, so again it would be metonymy. Clear? You got it how it is metonymy? Because song is something that is very trivial activity, and for that you have sold your goodly manner to him, one who is singing just before you. So if something is being sold for a song, it means something is being sold at a very cheap price. So for a song stands for a very cheap, hence it is metonymy. Chili, next, moving to the fourth question. The apartment was on the top floor, a small living room, a small dining room, a small bedroom, and a bath. I hope everybody can answer this question. It's very easy. It's a name of a novel, The Great Gatsby. Yes, you can easily see here I small, I small, I small. When a similar word or similar phrase is repeated, when a similar word or similar
phrase is repeated, whether in different phrases, different clauses, or different sentences, then it is called anaphora. It is called anaphora. When the same phrase or same word is repeated in different phrase, in the beginning of different phrase or in the beginning of different lines, it is called anaphora. Okay, everyone? Is that clear? Right? Chalo, moving to the next question. Fifth and sixth question, just before you. Question number 5 and 6. शेक्सपियर के रोमियो एंड जूलियट की लाइन है, नो इट्स नॉट सो डीप एज अ वेल nor so wide as a church door, but it's enough. It will serve. Laertes, antithesis, oxymoron, or hyperbole. No, it's not so deep. It's not so deep as a well. If something is not so deep as a well, it means how it is. If something is not so deep, so it is how it is, nor it is so wide as a church door, but it's enough. It will serve. यशिका चौधरी सेज इट्स ऑक्सीमोरन. ऑक्सीमोरन बेटा तब होता है जब दो ऑपोजिट वर्ड्स एक साथ होते हैं. दो ऑपोजिट वर्ड्स कहीं पे भी एक साथ दिख रहे हैं साथ साथ में. भूपेंद्र यू से इट्स एंटीथेसिस. फिफ्थ में यू से एनाफोरा. अभी पहले अच्छा सॉरी हाँ वी आर डिस्कसिंग फिफ्थ. फिफ्थ में यू से एंटीथेसिस. बट भूपेंद्र वेयर इट इज लाइक टू ऑपोजिट वर्ड्स पुट टुगेदर, जब तक दो ऑपोजिट वर्ड्स एक साथ नहीं आते इट्स नॉट एनाफोरा. Oh, sorry, it's not, you know, sorry, antithesis टू ऑपोजिट आइडियाज. जब तक एक ही सेंटेंस में दो क्लॉज एक दूसरे को कंट्राडिक्टरी करते हुए नहीं होंगे, कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए नहीं होंगे, इट कैन नॉट बी एंटीथेसिस. एक थेसिस के लिए दूसरा थेसिस, यानी एक आइडिया को कॉन्ट्राडिक्ट करता हुआ दूसरा आइडिया होगा, तभी वो एंटीथेसिस होगा. इट कैन नॉट बी एंटीथेसिस. या इट्स लाइटिटीज. वेरी गुड, इट्स लाइटिटीज. व्हाई लाइटिटीज का अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो. When negative is used to express positive, if something is not so deep, right, it means how it is. If it is something not so wide, then how it is. If it is not so deep, it means it is shallow. If it is not so wide, it is narrow. Is that clear? So when जैसे आप ये कहते हो ना he is not wise, he is not wise. अगर कोई wise नहीं है तो कैसा होगा? इसका मतलब ही इज फूलिश. तो जब भी हम नॉट से नॉट और इसी का एंटोनिम दे दो वाइज का, यही आपका रियल मीनिंग है. ही इज नॉट वाइज, इसका मतलब ही इज फूलिश. राइट. दिस सिटी इज नॉट बिग, इसका मतलब दिस सिटी इज स्मॉल. तो व्हेन नेगेटिव इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पॉजिटिव सेंस, राइट, जस्ट उसका ऑपोजिट, इट इज कॉल्ड लाइटिटीज. क्लियर भूपेंद्र, शेफाली? चलो 6 क्वेश्चन का आंसर करिए. Here at the small field's ending pause, where the chalk wall falls to the foam and its tall ledges oppose the pluck. W. H. Auden की poem है Look, Stranger. 6th question.
Shefali says it's C, assonance. It means assonance. Shefali, can you write down a few words in which the sounds have been repeated? As you said, it's assonance. It means repetition of vowel sounds. Archana says it's alliteration, repetition of consonant sounds at the beginning of two or more words. Shefali, note down a few words here. If your answer is an assonance, so assonance, those who don't know, let me tell you, assonance means where the internal vowel sounds are repeated in two or more words. Internal vowel sounds. Yes, it is assonance. And how it is assonance? Small, pause, chalk, wall, right? If you see small ka or pause ka or chalk ka or wall ka or false ka or these wall sounds are being repeated or not? Walls, false, chalk, small, pause. Same internal wall sounds are being repeated or not? Ankita, Alka. The repetition of same vowel sounds in two or more words is called assonance. Clear? Is that clear, everyone? यशिका, गॉट इट बेटा? एलिट्रेशन में क्या होता है ना, एलिट्रेशन में जैसे बिगिनिंग में जैसे यहाँ पे स्मॉल होता, यहाँ पे साउंड यहाँ पे भी आता, राइट? यहाँ पे पॉज होता तो पा साउंड कोई और आता, जैसे यहाँ फोम है तो यहाँ देखो फॉल्स तो है बट फॉल्स अ फो, राइट? क्लियर? यहाँ देखो फॉल्स टू द फोम एंड इट्स टॉल लेजेस, तो एलिट्रेशन में देखो फॉल एंड फोम, तो फा दो बार तो आया, राइट? नो डाउट, फॉल्स एंड फोम, फा फो, फा फो, तो दोनों साउंड थोड़े से डिफरेंट हो रहे हैं, जबकि यहाँ पे देखो स्मॉल, वॉल, फॉल, ये सारे वॉवेल साउंड्स है, तो वॉवेल का मतलब आ ए ई ओ उ, ये किसी वर्ड के बीच में हो, बिगिनिंग में नहीं, एंडिंग में नहीं, बीच में हो, और ये अगर बार बार रिपीट होते हैं तो दिस repetition is called assonance, repetition of vowel sounds. Clear, everyone? Chalo. Moving to the next question. Seventh and eighth question. Question number 7th and 8th are on the screen. When he shall die, take him and cut him out in little stars, and he will make the face of heaven so fine that all the world will be in love with night and pay no worship to the garish sun. शेक्सपियर के रोमियो एंड जूलियट की लाइन है. सेवेंथ क्वेश्चन का आंसर क्विकली. फर्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग. When he shall die, take him and cut him out in little stars, and he will make the face of heaven so fine that all the world will be in love with night and pay no worship to the garish sun. Alka says it's synecdoche. Again, synecdoche simply means when a part is used to express whole, whole is used to express part. तो अलका जी आप बता सकती हैं कौन सा वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है और क्या एक्सप्रेस करने के लिए? Alka, is there any word that is used to express whole or part?
चलो यहां पे मैं बता दूं। अच्छा, व्हेन ही शैल डाई, राइट, टेक हिम एंड कट हिम आउट इन लिटिल स्टार्स, and he will make the face of heaven so fine that all the world will be in love with night and pay no worship to the garrison. This is example of enjambment. देखो enjambment क्या होता है? enjambment में लाइनें जो हैं, राइट, विदाउट कंप्लीशन वो रिपीट हो जाती हैं सेकेंड लाइन में, कंटिन्यू हो जाती हैं, राइट। देखो व्हेन ही शैल डाई, अभी लाइन कंप्लीट नहीं हुई तो यहां से दूसरी लाइन शुरू हो गई, राइट, जबकि ये लाइन यहां पे भी लिखी जा सकती थी, बट ये सेकेंड लाइन में आ गया। अभी ये लाइन देखो एंड से कनेक्ट हो सकती थी यहीं पे सेकेंड लाइन में, बट ये थर्ड लाइन में लिख दिया गया। अभी देखो यहाँ पे फाइन, फाइन पे लाइन कंप्लीट नहीं है, तो व्हेन विदाउट कंप्लीशन लाइंस का ब्रेक हो जाना इज कॉल्ड एंजाममेंट। क्लियर? व्हेन द लाइन इज ब्रोकन, राइट, व्हेन द लाइन इज ब्रोकन इट इज कॉल्ड एंजाममेंट। ओके, विदाउट कंप्लीशन जब लाइनें ब्रेक हो जाती हैं तो इसे हम बोलते हैं एंजाममेंट। व्हेन ही शैल डाई टेक हिम एंड कट हिम आउट इन लिटिल स्टार्स, यहां तक हम एक लाइन कर सकते थे, राइट। अगर एंड ना लगाते यहां से हम ही विल मेक द फेस ऑफ हेवन सो फाइन दैट ऑल द वर्ल्ड विल बी इन लव विद नाइट, राइट। तो इट मींस विदाउट कंप्लीटिंग द सेंस, लाइन का ब्रेक हो जाना इज कॉल्ड एंजाममेंट। Hence, it is example of enjambment. Here, enjambment figure of speech is there. Hence, option D is your answer. चलिए 8th क्वेश्चन में आइए। द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफरॉग, जिन्होंने टीएस इलियट पढ़ा होगा, हमारे इसमें बहुत से स्टूडेंट्स हैं, राइट, जो टीएस इलियट पढ़े होंगे, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर टीचिंग जॉब्स। द वेस्टलैंड, one of the most popular poems of modern literature. But though I have wept and fasted, wept and prayed, though I have seen my head grown slightly bald, brought in upon a platter, I am no prophet, and here is no great matter. Alka, Shefali, Archana, Yashika, if you have any idea about answer, please. Be quick, please. सिंपल, आपको लाइन शायद कैच नहीं कर पा रहे हो। ये देखिए, आई एम नो प्रॉफिट एंड हियर इज नो ग्रेट मैटर। शेफाली, इफ आई एम नो प्रॉफिट, say it says I am no prophet. If I am no prophet, it means who am I? It means I'm just a common man. I'm no prophet. मैं कोई prophet नहीं हूं, इसका मतलब मैं क्या हूं? I'm just a common man. And it is no great matter. It means it's a trivial matter. Negative is used to express affirmative. Hence, it is like it is. It is like it is. I'm no prophet. It means I'm just a common man. And it is no great matter. It means it is just a trivial matter. Hence, it is like it is. Okay. So when negative is used to express positive, it is called like it is. Right. Moving to the next question. 9th and 10th question. Again, it's Shakespeare's Romeo and Juliet. Give me a torch. I'm not for this ambling. Being but heavy, I will bear the light. This line has been taken from Shakespeare's famous play, and that is tragedy, Romeo and Juliet. Yes.
नाइन्थ का आंसर बी. अलका has said B. English learning. It's it says B. And yes, it's correct. It's B. How it is B? Can you tell me? कौन सा वर्ड है जो यहाँ पे एक से ज्यादा मीनिंग दे रहा है? Yes. If you see the word light, give me a torch. Right? I'm not for this ambling, but being but heavy because I'm feeling heavy. I'm feeling sad, so I will bear the light. Right? एक्चुअली टॉर्च वर्ड को ये लाइट कह रहा है, बट यहाँ पे लाइट का मतलब है बिकॉज आई एम सो हैवी, आई एम फीलिंग सो हैवी, सो आई वांट टू बिकम लाइट. इट मींस आई वांट टू बिकम लिटिल बिट हैप्पी. Okay, then the word light is used in two sense. One, light means having a bit pleasure, having a bit light-hearted moment, and one is used light to express the meaning of torch. So here light is used in two senses, in two terms, and it is hence it is fun. Okay, yeah, light word is used in two senses. Clear? So it is fun. चलो, next 10th question. Mine is a long and sad tail, said the mouse. अब देखो माउस यहां बोल क्या रहा है? Mine is a long and a sad tail. 10th का आंसर करो. अंकिता, mine is a long and a sad tail. That's great. It's again tail. यहां पे देखो, एक्चुअली वो बता रहा टेल, जो माउस कह रहा है कि mine is a long and a sad tail, बट ये समझा क्या जा रहा है कि जो माउस की टेल है, राइट, कौन सी टेल? TAIL वाला टेल, राइट, ये उसकी टेल बहुत ही लॉन्ग है और सैड है. इज दैट क्लियर? See, pun is used just to create humor, and that humor is being created here. तो कहीं ना कहीं टेल का यहाँ दो सेंस है कि द टेल ऑफ माउस or the story of mouse. Is that clear? So again, it is pun. So moving to the next question. Yes, 13th and 14th. Question number 13th and 14th. नहीं नहीं Ankita, is not mine word. It's tail. Simply the word tail is giving two meanings, right? Tail means story, tail means tail. Tail of mouse. 13th and 14th, quickly. There are total 20 questions. The Baron was one of the most powerful lords in Westphalia, for his castle had not only a gate but windows. Voltaire ka candide. This line has been taken from Voltaire's Candide. 13th में metaphor. Bhupendra, how is it metaphor? How it is metaphor and how it is hyperbole? देखो आप लोग थोड़ा सा आई थिंक फिगर आउट नहीं कर पा रहे. देखो पहले तो यहाँ बैरन जो है कौन है? ये मोस्ट पावरफुल लॉर्ड्स है भाई, मोस्ट पावरफुल लॉर्ड्स में से एक है, राइट. अब सोचो कैसल है, वी आर टॉकिंग अबाउट कैसल. अगर हम कैसल या पैलेस की बात करते हैं, कह रहा है कैसल हैड नॉट ओनली अ गेट बट विंडोज. बात हम कर रहे हैं किसकी? कैसल की. और हम बात क्या कर रहे हैं उसके कैसल के बारे में? भाई ही इज वन ऑफ द फेमस मोस्ट पावरफुल लॉर्ड्स एंड हिज कैसल इज हैविंग ओनली अ गेट एंड बट विंडोज. यानी सिर्फ उसमें गेट और विंडोज ही नहीं है. आपने बात किसकी की? कैसल की. और आप क्या बता रहे हो यहाँ पे? सिर्फ उसमें एक गेट ही नहीं बल्कि विंडोज भी हैं. दिस इज कॉल्ड अंडरस्टेटमेंट. कैसल को आप अंडरस्टेट कर रहे हो. इफ इट इज अ कैसल तो डेफिनेटली इट मे हैव लॉट ऑफ गेट्स एंड विंडोज. इज इट क्लियर?
So it is understatement. Are you getting? If it is a castle, if it is a palace, so definitely it is going to have a lot of gates, lot of windows. Or you are calling it a castle, and it's not having only a gate but windows. It means you are understating. तो it is just opposite of hyperbole. Hyperbole में हम चीजें exaggerate करते हैं. We show the things more than they actually are. But when we show the things less than they actually are, it is called understatement. चीजें हम बढ़ा के नहीं, घटा के बोलते हैं. 14th में आइए. The forward wallet thus did I chide, sweet thief, whence did thou steal thy sweet that smells, if not from my love's breath? शेक्सपियर का सोनेट 99 है. यस. 14 क्वेश्चन का आंसर करिए. कृपा आई वांट आंसर फ्रॉम यू. अर्चना, अलका, प्लीज आंसर करो. और थोड़ा क्विकली करो भाई. अलका, बेयर क्या है? मतलब आंसर, आपका आंसर क्या है ना? इट्स ए बी सी या डी? क्या है आंसर 14th का? Now see what it says. It says the forward violet thus did I chide. Forward violet means जो violet flower है स्पीकर के सामने, राइट? क्लियर? उसको वो चाइड कर रहा है. चाइड में रिब्यूक. स्पीकर उसको डांट रहा है, राइट? कैसे डांट रहा है? स्वीट थीफ, वेंस मीन फ्रॉम वेयर डिड दाउ स्टील दाई स्वीट. ये यानी कि अपनी स्वीटनेस कहां से तुम ले आए, चुराए, दैट स्मेल्स, जो कि इतना स्मेल कर रहा है, इफ नॉट फ्रॉम माय लव्स ब्रेथ, क्योंकि तुमने लगता है जो स्वीटनेस स्टील किया वो मेरे बिलोवेड के ब्रेथ से. इज इट पॉसिबल टू स्टील समवन्स ब्रेथ, द स्वीटनेस ऑफ समवन्स ब्रेथ? Hence it is called hyperbole, right? Why it is hyperbole? Because no one can steal, right, one's sweetness of breath. Okay? Like, can a flower like violet, can a flower like violet steal the sweetness of someone's beloved's breath? Is it possible? Yashika, Ankita. So it is hyperbole, mean things are just exaggerated, just opposite of understatement. No one can steal someone's breath or the sweetness of someone's breath, especially a flower like violet. Hence it is hyperbole when the things have been exaggerated. Okay? चीजें यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के बोली जा रही हैं. There is exaggeration. Fifteenth and 16th question. You never know what worse luck your bad luck has saved you from. नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन, ये एक फिल्म है, हॉलीवुड फिल्म है. उस फिल्म की लाइन है ये. विश्रुता, गुड इवनिंग. Vishruta, good evening. Be quick at answering the questions. We have 4 more questions. You never know what worse luck your bad luck has saved you from. अब देखो यहाँ पे what you need to understand. Your bad luck, अब just think your luck is already bad, right? तो just a minute. क्वेश्चन स्लिप कर गया. अब यू हैव बैड लक, और आपका बैड लक क्या कर रहा है? आपको वर्स लक से बचा रहा है आपको.
If it is already bad luck, can it save you, right, from worse luck? Hence, it is paradox. Yes, it is self-contradictory statement. If it is your bad luck, तो definitely it is going to cause you something bad. अगर कोई बैड लक है आपका तो आपके लिए तो वर्स लक ही लेके आएगा ना. ये फ्रॉम जो है, जो preposition यहाँ रखा गया है, ये it should be here. Oh, sorry, यहाँ. From what worse luck your bad luck has saved you. You never know from what worse luck your bad luck has saved you. तो जब आपका बैड लक आपको आपके वर्स लक से बचा रहा है तो सेल्फ कंट्राडिक्शन हो गया. बिकॉज इफ यू ऑलरेडी हैविंग योर लक एज बैड, सो हाउ कैन इट सेव यू फ्रॉम योर वर्स लक? सो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, जहां स्टेटमेंट एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड पैराडॉक्स. तो पैराडॉक्स सिंपली मींस सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, जहां स्टेटमेंट आपस में ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि अगर बैड लक है तो आपको वर्स लक से नहीं बचा सकता. हाँ, यहां अगर गुड लक होता तो आपको गुड लक आपको बैड लक से बचा सकता. Because it was good luck, so you are saved from your bad luck. Chile, next, I would like to go by climbing a birch tree and climb black branches up a snow white trunk toward heaven. Robert Frost की बहुत ही अच्छी poem है Birches. I would like to go by climbing a birch tree and climb black branches up a snow white trunk toward heaven. Hyperbole, metaphor, alliteration या synecdoche. क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करिए क्विकली. I would like to go by climbing a birch tree and climbing black branches, right, up a snow white trunk toward heaven. तो birch tree, black branches, what do you find here? Birch, black branches. Yes, Archana, it is alliteration. Correct, Archana is correct. It's alliteration. Black branches. So here, ba means consonant sound at the beginning of two or more words is being repeated. Hence, it is alliteration. Is that clear? It is alliteration. Good. Chaliye, moving to the next question. 17th and 18th. 4 more questions. 17th, 18th, 19th, and 20th. Dickens A Tale of Two Cities इनका पॉपुलर नॉवेल है. It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness. A Tale of Two Cities by Dickens, one of the very popular novels by Dickens. Alka, you say it's metaphor. Metaphor means there is an implicit comparison. Where is the comparison? Which comparison you were talking about if it is metaphor? 17th A, antithesis. Antithesis में अंकिता से सर स्नो वाइट ब्रांचेस टुवर्ड्स हेवन, इसमें हाइपरबोल भी तो हो सकता है. स्नो वाइट टुवर्ड्स, अच्छा कोई चीज हेवन स्काई की तरह, यहाँ हेवन मींस स्काई अंकिता, तो अगर जो कोई भी ब्रांचेस हैं वो स्काई की तरफ हैं तो इसमें कौन सा हाइपरबोल है? राइट. अगर कोई चीज कहीं ट्विस्ट हुई है तो ऑब्वियस बात है तो डाउन ट्विस्ट होगी, या तो अप मीन टुवर्ड द स्काई, डाउन टुवर्ड द अर्थ. गॉट इट अंकिता? यहाँ पे टुवर्ड हेवन मीन टुवर्ड स्काई. भाई स्नो कवर्ड जो व्हाइट ब्रांचेस हैं, स्नो व्हाइट ब्रांचेस क्यों कह रहा है उसको? क्योंकि जो ब्रांचेस हैं दे आर लेडन विद स्नो, तो व्हाइट हैं, एंड दे आर लुकिंग टुवर्ड्स हेवन. हेलो वर्षा, क्लियर? अंकिता यू गॉट इट? क्लियर हुआ? आपका डाउट क्लियर हो गया? ओके. चलो. इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द एज ऑफ विजडम, इट वॉज द एज ऑफ फूलिशनेस. यस. कृपा सेज इट सी पैराडॉक्स. पैराडॉक्स में सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन होता है कृपा. तो क्या यहाँ पे सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन कहाँ है?
अरे यार, कंट्राडिक्टरी आइडियाज है भाई। इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम, एक तरफ टाइम बेस्ट है, फिर एक तरफ वही वर्स्ट ऑफ टाइम हो गया। एक तरफ एज ऑफ विजडम है, फिर वही एज ऑफ फुलिशनेस है। टाइम को बेस्ट, टाइम को वर्स्ट, राइट। एज को विजडम वाला एज, फिर एज को फुलिशनेस वाला एज। इसका मतलब दिस इज antithesis, yes, contradictory ideas are being put together. Best of time, worst of times, age of wisdom, age of foolishness. Clear everyone? So it is antithesis. Chale, moving to the next question, 18th. These beauteous forms, one of my favorite poems, Tintinabe by Wordsworth. These beauteous forms, through a long absence, have not been to me, as is a landscape to a blind man's eye, but oft in lonely rooms and amid the din of towns and cities, I have owed to them in hours of weariness. एक तो ऑप्शन में यहाँ नहीं है, बट एक चीज है, एंजाममेंट, क्योंकि लाइनें ब्रेक हुई हैं। दोस ब्यूटियस फॉर्म्स थ्रू लॉन्ग एब्सेंस हैव नॉट बीन टू मी एज इज अ लैंडस्केप टू अ ब्लाइंड मैन्स आई। अपोस्ट्रोफे कैसे हुआ? कहां पे यहाँ पे अपोस्ट्रोफे हुआ भाई? अपोस्ट्रोफे इज अ डायरेक्ट एड्रेस। किसको एड्रेस किया जा रहा है भाई यहाँ पे? डायरेक्ट एड्रेस कहां है? वेयर इज, वेयर इज द एड्रेस इन? Ankita, can you tell me the word or phrase which is used as transferred epithet? If you can tell me exactly that phrase, right? So I would really regard you to be very intelligent student. Now, by the way, ये transferred epithet है। कैसे? Lonely room. Is it the room that is lonely, or it is the person who is in the room he feels lonely? Ankita, आपने आंसर करेक्ट दिया, बट आपका एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है। योर एक्सप्लेनेशन शुड बी करेक्ट। इज दैट क्लियर? लोनली रूम, क्या कोई रूम लोनली होता है? इज इट अ मैन हु इज लोनली, और इज इट अ रूम दैट इज लोनली? क्लियर? तो यहां पे लोनली किसकी क्वालिटी है? इट इज द क्वालिटी ऑफ द स्पीकर, इट इज द एडजेक्टिव ऑफ स्पीकर, बट इट हैज बीन ट्रांसफर टू द लाइफलेस ऑब्जेक्ट मीन रूम। अब अगर लिविंग बीइंग की क्वालिटी को नॉन लिविंग को ट्रांसफर कर देते हैं, देन इट इज कॉल्ड ट्रांसफर्ड एपिथेट। एपिथेट मींस एडजेक्टिव, राइट? क्लियर? Hence it is transferred epithet. I hope it's clear everyone. चलो last two questions. Last two questions. Again Keats की Ode to a Nightingale की लाइन है, और ये बियोल्फ, राइट, बहुत ही पुरानी पोएम मानी जाती है। इंग्लिश लिटरेचर के बिगिनिंग के टाइम की पोएम है ये बियोल्फ। चलिए, Ode to Nightingale. Beauty cannot keep her lustrous eyes. Which figure of speech is there in this line? Beauty cannot keep a lustrous eyes. Ankita says it's personification. Anybody else? Anybody else who wants to answer? Who is not going to keep her lustrous eyes? Lustrous eyes किसकी है यहाँ पे? Sparkling eyes, beauty. Do you think beauty can have her lustrous eyes? It means beauty has been personified here. Beauty is being treated as a beautiful dame, beautiful woman. Hence, it is personification. Clear? यहाँ पे ब्यूटी को हम एज अ लेडी एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्ट्रस आईज, इट मींस ब्यूटी इज बीइंग ट्रीटेड एज अ वुमन, राइट? नेक्स्ट, देयर ओशन keel boarding, they drove through the deep and Daneland left. A sea cloth was set a sail with ropes firm to the mast, the flood timber moaned, nor did wind over billows that wave swimmer blow across her course. Cephali,
Are you answering the 20th question as your option C? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, कहां कहां से मैंने निकाल के इसको क्वेश्चन बनाए हैं आप लोगों के लिए। यस, आंसर प्लीज। देयर ओशन कील बोर्डिंग, राइट, देयर ओशन कील बोर्डिंग। ये ओशन कील क्या होता है? व्हाट इज ओशन कील? व्हाट वी बोर्ड? We are boarding ocean keel. They drove through the deep and Daneland left. And then they left Daneland with the help of ocean keel boarding. A sea cloth was set, a sail with ropes firm to the mast, the flood timbers moaned, nor did wind over blows that wave swimmer. Wave पे कौन स्वीप करता है? What is called as a wave swimmer? Wave पे कौन swim करता है? You are talking about ship. Clear? Wave swimmer means ship and ocean keel means ship. यहाँ पे दो phrase use किए गए हैं to express the meaning of ship. Hence it is metonymy. Yes. Clear? It is metonymy because ocean keel boarding. तो जब हम बोर्ड कर रहे हैं किसको? ओशन के कील को। तो ओशन कील को क्या है यहाँ पे? शिप। एंड अगेन वेव स्वीमर ब्लो अक्रॉस फ्रॉम हर कोर्स। अपने कोर्स, अपने रास्ते पर कौन चल रहा? वेव स्वीमर। वेव स्वीमर यहाँ पे क्या है? शिप। तो शिप के लिए हमने जो फ्रेज यूज किया है दैट इज क्लोजली एसोसिएटेड टू द वर्ड शिप, राइट? हेंस इट इज ऑप्शन ए। हाँ, यू कैन से इट इज सच अ टफ एग्जाम्पल बट डोंट वरी अंकिता, कोई एग्जाम्पल टफ नहीं था। इफ यू रिमेम्बर, अगर आपको यहाँ पे मैंने जो चैप्टर डाला है वो चैप्टर कभी पढ़ा होगा फिगर ऑफ स्पीच का, और उसके बाद फिर से आप ये क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको फिगर ऑफ स्पीच पूरा समझ में आ जाएगा। चैप्टर इज ऑलरेडी देयर, one video is already there over the chapter of figures of speech, and this is second, and that is only for exercise, right? One more exercise later on we'll do, तो कम से कम आपको एक अच्छा ग्रिप बन जाएगा फिगर्स ऑफ स्पीच पे। क्लियर? क्वेश्चंस थोड़ा सा डिफिकल्ट थे बट अच्छे क्वेश्चंस थे, isn't it everyone? तो आई होप दैट्स एनफ फॉर टुडे, राइट? अब नेक्स्ट सेशन का मैं टॉपिक डिक्लेयर कर दूंगा मैसेजेस में, तो आप लोग अपडेटेड रहिए, ठीक है? जो भी नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा, राइट? चलिए, सी यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट।